Welcome back to our stream again. So we have started our Monday morning. We have started our live stream regarding gold. As you can see, this is the gold chart. I'll just remove all the drawings so that we can do the analysis together with clearly. And if you are new to our channel, just to tell you, join our Telegram. And if you have any doubt, you can ask me there. The thing is, now let's go to the gold chart. And if you just see here, previously we have mentioned you in our VIP group. So previously we have mentioned in our Telegram, if you just check in our XHedge group, there we have mentioned you that gold will go by. If you don't see, check it in our group, okay? And that was our trade, which we have given you Friday evening. So Friday evening we have given you this trade in a gold, and I have mentioned you that you can keep your target up to here. Just check it out our Telegram. There I have mentioned this. The reason is 30-minute time frame. Mentioned this on Friday evening before we got closing our stream, and in our Telegram we have mentioned that in 30 minutes we saw the breakup structure, and we saw that that is a FVG here. So I mentioned you go for the buy. If you just taken from this area, that was like 60 to 70 pips. Again market gone down. I know that many of you have came out, but that was the okay, that was the long term investment. And if you just see how many pips I have given this trade, was minimum that was a okay 72, that means 700 pips I have given this trade, and that already gone 700 pips. Okay, so that was my trade on Friday, and today let's see what we can do and what is our view. Okay, kindly if you just check it out, gold has like 30-minute time frame. If you see like 1 2 3 4 candle, which means again it's doing a range. Okay, so between this area market is doing a range here. Let's go to this gold. Okay, I just trade. Okay, here if you see here market is doing a range, so we could not take any trade this zone due to the range. What we can do, we have to wait for breakout, like range breakout, then you can enter in a trend. And if you just see here, like when was this Monday morning to here, it was like slowly doing a range. When it break the range, it given us a good pump upside. Like if you hold, or if you just wait after the breakout, if anyone taken, like they have got like 100 pips of trade. And again it's doing a range, so like it's doing accumulation and manipulation. So you can call this as accumulation, where the market is full sideways, no buy no sell, again buy sell, it's happening here. So this is accumulation, here it's doing a manipulation. We have to wait for distribution. So distribution, when we'll get the distribution, after the break the range. रेंज पे ट्रेड करोगे तो थोड़ी बहुत रिस्क रहेगा यहाँ पर ट्रेड करने पे, क्योंकि रेंज पे कोई ट्रेड मत करो, रेंज ब्रेकआउट होने दो, उसके बाद एंटर करना ट्रेड पे. एंड 1 कैंडल 2 3 4 5, दैट मीन्स लास्ट 2.5 minutes market is like a up and down
no proper volume, no proper momentum, right? So what you can do 30 minutes after, if you just go to the 15 minutes, same things you can see here. It did the range, then after the range break, and suddenly you can see the bullish candle 3, and that was the retest. If you see here, market did the retest here and gone outside. Check it out, it did a retrace. Okay, so just remove this so you can see that मार्केट ने रिट्रेस किया है यहाँ पर. Market did retrace here. Now again it's doing a range. My views buy side. Let me tell you clearly why I am seeing in a buy side. So if I check it out and if I go to the small time frame like 5 minute also, ये वाला मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम पे मेंशन किया हो कि भाई मार्केट इज ना बाई साइड. आई हैव मार्क द एरो. सो किसी का कोई भी डाउट है भाई कौन सी डायरेक्शन में जाएगा मार्केट, तो एक बार टेलीग्राम पे चेक कर लो. टेलीग्राम पे मैंने पूरा शेयर किया हो एनालिसिस. सिंपल सा एनालिसिस था. यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर प्रॉपरली एक ट्रेंड की तरह फॉलो हो रहा है मार्केट. ठीक है, मार्केट इज फॉलोइंग अ ट्रेंड properly like 1 2 3 something here. So, yeah, so I have mentioned this in our telegram that market gonna be a buy side. If you have any doubt, I will just okay do a window capture one more time. Okay, so in telegram we have mentioned you, as you can see that, okay, we have mentioned that you can go for the like bullish momentum when the market was in a 64, right? Now if we just see market already crossed 64 and it has given a bullish momentum little bit. Right now again it's a sideways, and if you just see market did a retrace from here, that was the reason. If you just go to the 1 minute time frame,
If you go 1 minute time frame, you will see here there was a retrace area. Okay, so market did a spike there, then sudden fall. And if you ask me, as I mentioned you in 15 minute or 5 minute, just check it out. Market has the bullish trend following the trend line, did a retrace. Now it's need to go to the all-time high. Okay, it need to go to the all-time high. Simple concept. I have taken this trade like retrace here, and it need to go upside. That is my view. Gold is in a buy side, and this has been shared in our Telegram. So if you have any doubt, you can ask me here. That is my simple concept of market in a bullish. So if we have taken a trade from like 64, which was here 64 to 59, 60 pips reversal, and you would have got a good pips of profit. Okay, okay, so 1 2 3 4 candle, which tells us, look at this bullish candle, which tells us the market is in a buy side. And now again it's doing a range, but if we see one time market did a spike and break the range, so we can say that market still in a bullish. And if we just see here continuously, it's a bullish momentum and trend. So let's wait and see, will we get 4078 or what? Okay, 4078 is my target. Let's do our best. Let's see. Until it break this trend and this zone, that was the fresh retrace, you can hold your trade. Okay, you can hold your trade until it break this zone 59. So 59 to 69, even though if you take now, it's a 100 pips of ASL, but like it will be like a 1:1. So if you enter now, this will be like 1:1, which no reason, right? Whenever market comes to the down, like I told you, from like 64, which is here currently in Telegram, I have shared this. Just join a Telegram, buy the analysis, you can take trade and make some profit in it. If you have any doubt in gold, you can ask me. That was the simple concept. I have taken this trade which is in a trend line with a retrace zone. And if you check in on 1 minute time frame, you will find out there is a change of character is done. Like here, you can check it out. Market already done a change of character here, this area. So here it made a CHOC. Here it made a breakup structure. Okay. So after the change of character, market did a retrace here, right? After the retrace, market given a good buy side. I know right now it's doing a sideways, going on a sideways, but the thing is, my view is gold in a buy side until it break this 4059. If 4059 breaks, then market will come up to this demand, which is 4055, which is on a 40 pips. Okay, until you break this 59, you can stay in a buy side, you can hold your trade.
हाँ? Okay, that's my view. Okay, that's my view. If you just check it out, okay, simple concept was there right now, right? So you can see the trail line which I have drew here, and you can see the retrace, right? And if you see here in 1 minute time frame, I saw the change of character. That is the reason my view was the gold buy side, and it will be my target up to like 4077. The thing is, market did a retrace here. You might know, and if you have any doubt what is the reason of market retrace, तो यहाँ पर देखोगे तो ये था रिट्रेस का जोन, इसीलिए मार्केट ने एक रिट्रेस किया है, ठीक है। बट मेरा व्यू है कि यहाँ तक जाएगा मार्केट पूरा यहाँ तक, एंड इफ़ यू वांट टू टेक अ सेल ट्रेड तो मैं सजेस्ट करूँगी कि इसको ब्रेकआउट होने दो। ओके, 4058 ड्यू टू दी ट्रेल लाइन। एक तो ट्रेल लाइन है, ओके, एक तो ट्रेल लाइन है, एंड ये है रिट्रेस। सो अंटिल इट ब्रेक दिस वी विल स्टे इन अ बाय साइड, एंड हम लोग ट्राई करेंगे कि यहाँ से बाय को प्रॉफिट करें। एंड किसी ने अभी तक एंट्री नहीं किया तो इट्स ओके फाइन इफ़ यू हैव एन एंटर, क्योंकि अभी देखोगे तो एक तो भाई पूरा साइडवेज पे हो रहा है मार्केट, तो साइडवेज जब ब्रेकआउट हो जाएगा 4074 तब भी तुम लोग एंट्री कर सकते हो बाय की तरफ। 74 पर आप लोग एंट्री करो एंड 79 तक। हाँ? होप योर कॉन्सेप्ट इज क्लियर, जस्ट चेक इट आउट। ये था मेरा व्यू कि अभी तो साइडवेज पे है मार्केट, तो साइडवेज ब्रेक हो जाएगा 73 टू 74, तब फिर से तुम लोग बाय करो, नहीं तो मार्केट को नीचे आने दो, ठीक है, नीचे आने दो यहाँ पर। नहीं तो एक ट्रेल लाइन जब यहाँ से फॉलो हो रहा है तो उसको भी देख लो, उसको भी देख लो, एंड यू कैन एंटर इन अ ट्रेड, ठीक है। मेरा तो व्यू है बाय की तरफ अंटिल इट ब्रेक दिस जोन। अभी भी 100 पिप्स का भी ड्रॉ डाउन बनेगा इफ़ यू एंटर नाउ, तो मैं सजेस्ट करूँगी कि ऊपर से बाय करो जब ये वाला रेंज ब्रेकआउट हो जाएगा 74। नहीं तो यहाँ पर नीचे आने दो 62 से एंटर करो 58 तक, 40 पिप्स तक आप लोग एसएल को होल्ड कर पाओगे, राइट। नहीं तो यहाँ से अभी बाय करोगे तो आपका 1:1 हो जाएगा, तो इसलिए मैं माना करूँगा। बट आपके पास बैलेंस है 100 पिप्स को होल्ड करने का, देन यू कैन एंटर इन अ ट्रेड एंड आप होल्ड कर सकते हो। नहीं तो जस्ट लीव द ट्रेन नाउ, अभी जस्ट ऑब्जर्व करो क्योंकि साइडवेज पे है, रेंज हो रहा है। इफ़ यू डोंट वांट टू टेक दैट्स फाइन, नहीं तो आप चाहते हो तो आपका रिस्क थोड़ा कम कर लो, लो रिस्क पे एंट्री करो, ठीक है। जैसे ही आपको मिलेगा आप एंट्री कर सकते हो, एंड ट्राई टू टेक ट्रेड इफ़ यू गेट एनी कंफर्मेशन फ्रॉम योर साइड ऑल्सो, ठीक है। आपको कोई कंफर्मेशन मिले तो आप भी एंट्री करो, नहीं तो मैं सजेस्ट करूँगी कि यहाँ पर अभी रेंज हो रहा है। बट द थिंग इज मेरा तो बाय व्यू है, सिंपल सा था, ट्रेल लाइन था, यहाँ पर रिटेस्ट हुआ है, मार्केट ने इसको डिमांड को टच करके देन उसके बाद बाय जा रहा है। एंड इसका पूरा एनालिसिस मैंने टेलीग्राम पे दे चुका हूँ, आई हैव गिवन दिस इन आवर टेलीग्राम, तो check it out in our telegram. And Friday we have shared this analysis, like Friday we have shared and it gone up to 700 pips. Today we have shared this. The thing is just utilize, analyze yourself, and if you get any confirmation from your side you can take the trade, right? And किसी का कोई भी डाउट है ये आप पूछ सकते हो।
Okay, even though it's in a range, we can take trade.
Okay, you can use this as a scalp. Like if it break, go for the buy. Until that, you can take a small buy, keep your asset below this like 66, 68, and target up to 70. That is like 1:1, right? Okay, you can utilize, but you can take only scalp like 20 pips. The thing is, यहाँ पर fully it's doing a range. तो रेंज जिस साइड ब्रेकआउट करेगा उस साइड तुम ट्रेड ले सकते हो। मान लो कि नीचे की तरफ ब्रेकआउट कर दिया, ठीक है, इसके नीचे, तो यहाँ तक कम से कम तो आएगा, क्योंकि इफ़ यू फॉलो द ट्रेड लाइन, ट्रेड लाइन को फॉलो करते हो, कम से कम तुमको देखो तो यहाँ तक तो आएगा, जो भी है 64। ओके, 30 पिप्स तुमको मिलेगा। एंड लेट्स सी, आप लोग का कोई व्यू है तो यू कैन टेल मी इन कमेंट बॉक्स कि कौन सी डायरेक्शन पे आपका व्यू है गोल्ड के बारे में। एंड लेट्स सी द बीटीसी, वी हर्ड द बीटीसी very bad condition like Saturday. 1 hour, look at this, that was the on Saturday. I just mentioned you, this was the BTC that was doing a range। तो मैंने बताया जब रेंज ब्रेकआउट करेगा तभी एंटर करना ट्रेड पे, नॉट लाइक अ स्वीप। ओके, तो रेंज ब्रेकआउट कौन से डायरेक्शन पे हुआ था? नीचे की डायरेक्शन पे। एंड फ्रॉम 121 से मार्केट ने गिरा 109 तक। आपको पता ही है, इट्स नॉट अ स्मॉल अमाउंट ऑफ फॉल, जस्ट चेक इट आउट। तो यहाँ से भी कैलकुलेट करके यहाँ तक भी देखो तो इट वाज लाइक 1200 पिप्स इट फॉल। ओके, सो इतना तक मार्केट गिरा है। अभी ये ऊपर की तरफ जा रहा है, एंड यहाँ पर भी सेम देखोगे तो अभी धीरे धीरे मार्केट मूव कर रहा है। तो यहाँ पर मेरा व्यू तो है बाई, क्योंकि यहाँ पर भी देखो तो ये वाला जोन पे रिटेस्ट किया है मार्केट ने बीटीसी पर।
Still market is in a sideways, as you can see. Okay, due to that we can't take proper trade. We have to wait for the breakout. Be patient. If we do a breakout, then we can enter in a trade and make some profit in it. Okay, so let's see guys what happens, क्योंकि गोल्ड पे तो अभी ट्रेड नहीं कर सकते, पूरा रेंज हो रहा है। एंड बीटीसी में मेरा व्यू है यहाँ इसके ऊपर से बाय करना।
ओके, हैज बी मेंशनड यू कि भाई ये तो जाएगा ऊपर की तरफ ही। एंड इसका व्यू ऑलरेडी मैंने टेलीग्राम पे दे चुका हूँ, ठीक है। किसी का कोई भी डाउट है तो यू कैन आस्क मी हियर और यू कैन चेक इट आवर टेलीग्राम। सिंपल सा कॉन्सेप्ट था इस पे, तुम देख सकते हो, ठीक है। When I have given the trade, that time market was in a 64. Now it gone to 75. That means 100 pips already crossed the trade which we have shared in our Telegram. Okay, simple concept was that. The thing is, market was in a trend line, gap in trend line, and it was in a retrace zone. You can check it out. Okay. I hope you have taken this trade, right? And you can enter now also, but keep your ASL below 73, like 20 pips of ASL, and you can make this profit. The reason is simple: if market could do the retrace also, will do in 73, and after that market will go upside only. And this is our supply area. This is my trade which I have shared in our Telegram. Check it out. If you have any question, you can ask me. Okay, you can ask me, and it was shared you here live. আমার ভিউ 22 থেকে, আমার ভিউ 22 থেকে। এখন নেবে 20 পিপস পাবি তুই, 20 থেকে 30 পিপস ম্যাক্সিমাম পাবি, তাই জন্যই বলছি নিলে নে। যেমনি আসছে তেমনি এসএলটা রাখিস, 70 20 30 পিপসের টিপি যখন আসে 20 30 পিপসের এসএলই রাখিস, 25 পিপসের টিপির জন্য বেশি করে রাখিস না। So we know we got the situation, the mapping, and 78 तक मैक्सिमम जाएगा गाय तो उसके बाद स्वीप करके ऊपर की तरफ भी जा सकते हैं, नहीं तो नीचे की तरफ भी जा सकता है। Or you just have to wait for this one again.
as I mentioned, gold only buy side, no sell until it break the trend line, right? So if you just see here, it already followed the trend, did a range, it came to the retest in a range, then it gone upside. Nearly, if you just check when I told you gold buy, okay, so it gone good buy side. The thing is, you can check it out. Doubt anything, question you have, let me know. Right. तो इफ यू जस्ट चेक इट आउट, ये अभी सप्लाई मार्केट पे ही है, ठीक है। एक रेड कैंडल फॉर्म हो जाए तो हम लोग एक सेल की तरफ भी ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि ये फुल्ली सप्लाई एरिया, क्योंकि यहाँ पर जो जो सेलर्स है दे विल पुश द मार्केट डाउन साइड। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग देखेंगे कि मार्केट कब सेलिंग पे फॉर्म होता है। इफ इट फॉर्म है सेलिंग, देन वी विल गो फॉर द सेल। और इफ यू डू अ रिट्रेस, मार्केट ऑल टाइम हाई ब्रेक करके रिट्रेस करे, तो भाई फिर से तुम लोग गोल्ड बाय की तरफ जा सकते हो। यू कैन गो गोल्ड बाय इफ इट मार्केट ब्रेक दिस अगेन ऑल टाइम हाई एंड डू रिटेस्ट। ओके, ये मैंने ऑलरेडी मेंशन किया था। ओके, कि गो फॉर द बाय साइड, एंड जो जो बाय लिए थे उसको प्रॉफिट तो हो चुका है ऑलरेडी। मैंने बोल भी रखा हूँ यहाँ पर कॉल बाय व्यू ओनली, ठीक है। एंड ये पूरा ट्रेड लाइन को फॉलो हो रहा था, तो ट्रेड लाइन फॉलो पे मैंने यहाँ से तुम लोग को मेंशन किया था कि मार्केट जाएगा। एंड इफ़ यू हैव डाउट्स तो टेलीग्राम पे चेक करके देख लो। टेलीग्राम पे मैंने मेंशन किया कि गो फॉर, मतलब आई इंडिकेट दैट गोल्ड इज द ना बाय साइड। Even it's doing a retrace, you can go buy. Okay, you can go buy. If you check it out, यहाँ पर भी फेयर वैल्यू गैप भी है, फेयर वैल्यू गैप पे टैप हुआ है। You can go for the buy with a low risk of, like, you have to keep your ASL 73. Okay, 10 pips का ASL आप चाहते हो तो 10 pips का यहाँ से रखकर एंट्री। ओके, 73 यहाँ पर राइट मार्केट था, यहाँ पर ASL रखकर तुम जा सकते हो फिर से ऊपर की तरफ ही, ठीक है। ऐसे रख सकते हो। ये भी देख सकते हो 1:2 की ऊपर है। ये मैंने क्यों बोल रहा हूँ कि ऊपर की तरफ जा सकते, क्योंकि इतना बड़े बड़े ग्रीन कैंडल फॉर्म हुआ है, जैसे 1 2 3 कैंडल। एंड चे सकते हो यहाँ पर छोटा सा एक फेयर वाली गैप की तरफ फॉर्म किया है, ठीक है। तो इसके नीचे एक कैंडल क्लोज हो जाए 10 सेकंड के बाद, तभी बाहर आ जाना, नहीं तो ये अभी फिर से ऊपर जाएगा, ठीक है। अभी वेट करते हैं 4 सेकंड 3 सेकंड, इसके नीचे कैंडल क्लोज हो जाए तभी मार्केट नीचे जाएगा, नहीं तो यहाँ से फिर से एक पंप करेगा ऊपर की तरफ, क्योंकि यहाँ पर लिक्विडिटी स्वीप भी कर सकते हैं, मतलब जो जो न्यू एंट्री कर रहे हैं वो लोग को भी रिमूव कर सकता है। मेरा तो व्यू है बाई की तरफ ही। ओके, इट्स नॉट फॉर्मिंग एनी कैंडल, 1 मिनट पे देख लेते हैं। ओके, बियरिश फॉर्म कर रहा है, ठीक है। अभी भी देखते हैं कोई ट्रेंड है क्या, नहीं है। ये वाला काम नहीं किया, तो मतलब गया है तो 10 पिप्स का लॉस। बट इफ इट कम्स यू विल गेट अ, यहाँ पर 74 to 80, मतलब 40 पिप्स तुमको मिल सकता था, राइट। प्ले एवरी जोन, जहाँ पर तुमको जोन दिख रहा है जोन को प्ले करो। ओके, प्ले इन एवरी जोन। হ্যাঁ, এখন কত অবধি ধরে রেখেছিস এখন বাইনি?
check this out. So if it comes down, then you can enter in a again a buy. This is don't enter, stay in a confirmation. Okay, wait for the confirmation, then enter. कौन कौन ये वाला बाय लिया है, लेट मी नो. हमने टेकन बाय और हमने फिर ये ना सेल. आई एम नॉट सेइंग एनी सेल राइट नाउ. ठीक है, मेरा तो कोई बाइंग का व्यू है. जब तक मार्केट नीचे की तरफ प्रॉपर्ली ब्रेक ना करे तब तक मेरा कोई सेलिंग का व्यू नहीं है. whenever market comes down, try to enter with a layer a buy. Okay, let's check, let's see what happens. किसने किसने बाय लिया था भाई, लेट मी नो. ठीक है, कौन कौन बाय लिए हो या कौन कौन सेल पे हो, लेट मी नो, सो दैट वी कैन डिस्कस. एंड हम लोग का कोई भी अलग व्यू है तो हम लोग यहाँ पर बात करके उसको एनालिस कर सकते हैं एक साथ. ओके, तो मेरा तो देख सकते हैं यहाँ पर सिंपल सा कॉन्सेप्ट था. यहाँ पर देख सकते ट्रेंड लाइन था एंड ये वाला जोन पे टैप हुआ है. इसको नीचे आना तो यहाँ तक भी आना तो 61 तक, फिर भी हम लोग एक बाय ले सकते हैं नीचे से. I'm not taking any trade now, just to see. Let me know in a comment box क्या व्यू है आप लोग का. एंड व्हाट हैपेंड टू आवर बिटकॉइन. बिटकॉइन भी मेरा व्यू था बाय के लिए, अभी तक आया नहीं. इसको ब्रेकआउट करना है तो उसके बाद बीटीसी पर एक बाय है. अभी से कोई भी एंट्री करना चाहते तो भाई यस यू कैन एंटर बीटीसी राइट नाउ ऑल्सो. द थिंग इज आपको फिर होल्ड करना पड़ेगा. ठीक है, कोई भी बीटीसी पर इफ यू वांट टू एंटर इन अ बाय, I would say yes, you can enter in a buy. The thing is, you have to keep your SL below 14400 minimum. That means like no, it's quite big SL, 70 to 80 pips of SL. So don't try to enter BTC right now. BTC, wait for this breakout, then you can enter. There is no zone here, so minimum you will get up to here like 25. No, not 25. If it market break this high and if it cross, then you will get a 120 pips.
Okay, 120 pips you will get from here to here, right? So wait for the breakout, be patient, take only one trade, but it should be a profitable trade. एंड गोल्ड पे कोई भी ट्रेड लेना चाहते हो तो भाई बाय की तरफ ही रहो until you break this 67 to 68. Okay, 68 or 67, if it breaks then you have to come out. 67 breaks, you have to come out. No more trade for the day, I mean no more trade for now then. Okay, then we will plan for the sell side. Super, super. নাহলে কিছু একটা বুক করবি, একটা ধরে রাখবি, তো যদি তোর মনে হয় যে আরো উপরে যেতে পারে একটা বুক। গুড, তো এরকমই। Okay, so you can see smoothly market is going upside, so you can enter, right? You can enter, you can check it out like 72, 73.6, which is 36 already. It crossed. कैरेक्टर मेरे को बताना, ठीक है? वो तो भाई अच्छा खासा ऊपर की तरफ पुश कर चुका है, इट्स गोइंग वेरी वेल। How many of you have entered? Let me know, okay? किसने किसने ये वाला गोल बाय लिए हो मेरे को बताना। मैं तो भी तो बाय की तरफ ही।
Who took this trade, guys? Who taken this trade and made profit? Who have taken? Let me know. And I do share every signal in our Telegram. तो टेलीग्राम पे भी चेक करके देख सकते हो. Go to the Telegram and check it out. Okay, and tell us. What we have captured today morning, 128 pips from this low area from 64, and just check it out in our Telegram. It already gone upside. सुबह सुबह आस्ते आस्ते আস্তে আস্তে করে হ্যাঁ এটা আমরা বাই আছে তারও লস হয়ে যাচ্ছে
जो देखते हैं गाइस, मार्केट तो ऊपर की तरफ जाना चाहिए। स्टिल इट्स कंटिन्यूसली लाइक अ लो वॉल्यूम, मार्केट में थोड़ा वॉल्यूम कम है अभी। यूएस सीजन पे वॉल्यूम आएगा तब हम लोग को एक बहुत अच्छा खासा मोमेंटम मिलेगा। अभी जो भी मिल रहा है भाई, लो रिस्क पे ट्रेड लाइन फॉलो होकर जा रहे हैं मार्केट। ठीक है, लेट्स सी। ओके, लेट्स सी। ड्यू टू दी ट्रेल लाइन, आप देख सकते हैं यहाँ पर एक ट्रेल लाइन है। मे बी आई जस्ट ओके, सो दैट यू कैन सी दिस। यहाँ पर एक ट्रेल लाइन है, इस ट्रेल लाइन को फॉलो करके मार्केट जा रहा है ऊपर की तरफ। एंड लास्ट टाइम भी मार्केट ने इस वाला ट्रेल लाइन को फॉलो किया था एंड यहाँ से मार्केट ने अच्छा खासा बुलिश मोमेंटम दिया था। यहाँ पर रेंज भी हो रहा था, रेंज ब्रेकआउट हुआ है, मार्केट ने अच्छा खासा एक बाई की तरफ मूव किया है। ये वाला मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम पे मेंशन किया हूँ, आप देख सकते हो एंड चेकआउट भी करो। किसी का कोई भी डाउट है कि कौन सी डायरेक्शन में मार्केट का व्यू है, आई कैन टेल यू दैट मार्केट इज दी ना बाय की तरफ व्यू है, क्योंकि प्रॉपरली देखेंगे तो यहाँ से जा रहा है ऊपर की तरफ, तो इट्स कंटिन्यूसली अ बुलिश मोमेंटम। Okay, continue. It's in a bullish momentum. We are just doing a scalp and making profit in it. Okay. Whenever market comes here and here, we just took a trade. We are doing a scalp because we can see there is a trail line here and there is a retrace here. So what I'm doing is just taking a trade buy side with a scalp, doing it, and 20 to 30 pips I book and I come out. So most partially I just book all the profit and just leave 10%, 90% of our profit was booked. So you can do that way. Okay, you can do that way. You can enter in a trade whenever market comes to this area like 71 to 70 zone, 69. Okay, so 20 pips will be your entry zone. Wherever you get here you can enter, but try to cut your trade whenever there is a candle close in a 1 minute or 5 minute. Okay, like here 68 you can come out, or maximum if you want to hold your trade you can hold up to this candle low. Due to the demand here also you will find out the demand, because market has moved from here, right, moved from here. So this candle has the volume, here it has a demand where the market can go again upside from this area, right? Or if a trend line breaks, then we will see 1 minute or 5 minute candle close, or if it done any retrace then we will come out. So until that, whenever market comes here 71 से 69 के अंदर जहाँ पर भी मार्केट तुमको मिले, बाई करो, छोटा छोटा बाई करके आप लोग प्रॉफिट करते रहो। ठीक है, so you can take a buy and make a profit in it with a low risk, do scalp and make come out. Okay, so that's my view. क्योंकि अभी थोड़ी देखोगे तो यहाँ पर क्या हो रहा था, रेंज हो रहा था, रेंज होने के बाद जितना ऊपर जा रहा है उतना ही मार्केट नीचे आ रहा है, राइट? सो वेन एवर मार्केट्स गिविंग अस अ 20 to 30 pips of profit, same way it giving us a profit in a sell side also, right? So we can hold this trade, we can do only scalp due to the range. So again if market comes here like 76, we might get a sell, okay, but we won't take that because it's a bullish market. Bullish market we won't be taking any sell, but if it do again retrace and do okay range, then we will enter in a buy only, no sell. और एक चीज़, जब A79 ब्रेकआउट करके रिट्रेस करे तो हम लोग जाएंगे बाय की तरफ, यहाँ से भी, और एक बार भी रिट्रेस करे तो और भी बाय की तरफ चले जाना। ठीक है, so you can keep your target like 1:2, you can keep minimum, right? You can do that and you can hold maximum of your trade. That way do scalp, make profit in it. किसी का कोई भी डाउट है आप पूछ सकते हो कि क्या व्यू है, क्या डायरेक्शन है, right? So you can change it. Okay, किसी का कोई भी डाउट है कहाँ से ट्रेड करना है या क्या कुछ, किसी का कोई भी डाउट है, इफ यू हैव एनी डाउट
let me know. Okay, let me know just so that you won't have any question and we can go take this trade smoothly. We have found many zone in here. The thing is that if you take a trade, you can do only scalp due to the range. Just check it out, right? Just check it out. You can see that here it's doing like an accumulation. Market did the accumulation. Here it's doing a manipulation. Manipulation means like no sell, no buy. It's doing a range, okay? So it's manipulating us that, it telling us that it will go sell, but what is happening, it's going buy, right? Then after you can see here, it's in a trail line, so that those who follow the trail line take trade, वो लोग भी यहाँ से बाय करें. तो यहाँ पर accumulation manipulation both are going on. तो डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग को कहाँ पर मिलेगा, मेरे को जितना भी लग रहा है कि ए वाला ब्रेकआउट करेगा तभी हम लोग को डिस्ट्रीब्यूशन मिलेगा. एंड इसके लिए हम लोग को कभी, अभी तो लंदन सीजन ओपन हो चुका है, तो लंदन सीजन पे मे बी विल गेट अ डिस्ट्रीब्यूशन, अदरवाइज विल गेट अ डिस्ट्रीब्यूशन इन अ यूएस सीजन. यूएस सीजन टू न्यूयॉर्क सीजन में हम लोग को डिस्ट्रीब्यूशन मिलेगा. तब तक मार्केट ऐसे रेंज करेगा, बट इन दिस रेंज आप जस्ट फॉलो करोगे तो तुमको देख पाओगे कि यहाँ पर ट्रेल लाइन था, इसीलिए ट्रेल लाइन को फॉलो करके करके मार्केट 20-30 पिप्स दे रहा है. नहीं तो जो जो सोच रहे हो कि भाई मैं लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड करूंगा, वो को थोड़ी दिक्कत आएगा, क्योंकि यहाँ पर लॉन्ग टाइम की होल्डिंग के लिए कोई जोन नहीं है, ना है प्रॉपर कोई ऑर्डर ब्लॉक, ना है कोई फेयर वैल्यू गैप. If you just see here, there is no proper three candle here to identify there is a fair value gap. Look at this, like one candle itself given us, like here it given us a fair value gap, but I tell you, this is not a proper fair value gap, right? Like no proper zone. So it's doing a range here again. Again, whenever market comes here, you can enter like from 71. Okay, you can enter from 71 due to this. Okay, consolidation. We are not entering in this trade, but we entered doing a scalp and we came out. Okay, that's a different matter, but we are not holding any trade. Enter, make profit and come out. So already I have mentioned here gold by view only. My view is okay, this. और भी things are there like यहाँ पर, क्योंकि if you go to the 1 hour time frame, this zone is a fresh zone. Already we can see that market already tap one time, right? But if you do again a tap, then again you can enter in a trade like here. Long time frame पे चले जाओ, 1 hour पे अभी देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक आ जाए 59, then again you can enter a buy from this 59 and you can target all time high again, right? And you can keep your SL below this candle. Well, it's very simple, you can do that. Okay, you can check it out guys. फिर से देखो, मार्केट आया था यहाँ पर 71 to 73.4, मतलब 20 पिप्स ऑलरेडी चला भी गया, आ रहा है 20 पिप्स दे रहा है, चला भी जा रहा है. तो accumulation and manipulation is going on in this zone, but those who have taken early, they have made a profit. Just relax now. Market is 24/7 open now for these 5 days. So take only one take trade and make profit and come out. Okay guys. Okay. Okay, it seems like it's try to break this trend line.
कैमरा ऑफ है बोलो। Okay, so you can check it out. I have given you the map, like what you have to do. If it break this trend line, go for the sell. कहाँ से कहाँ तक सेल कर सकते हो? जैसे ही तुम देख रहे हो यहाँ पर ट्रेड लाइन ब्रेकआउट हो रहा है ये वाला जोन पे, तो मैक्सिमम ट्राई टू चेक इट आउट कि यहाँ तक 67, ठीक है। इसके नीचे जब मार्केट क्लोज हो जाएगा, आई थिंक मार्केट कैसे मूव करेगा, आई विल जस्ट गिव यू अ नॉर्मल ग्राफ। ओके, मार्केट पहले इसको ब्रेकआउट करेगा, ओके इसको ब्रेकआउट करेगा, यहाँ तक आएगा ब्रेकआउट करके 66, उसके बाद यहाँ पर बायर्स लोग को ट्रैप करेगा यहाँ तक आने के बाद, क्योंकि एक ट्रेड लाइन रिट्रेस पर आने के बाद ऐसे आएगा मार्केट, सो दैट विल बी दी सेलिंग ट्रेड। ओके, क्यों यहाँ से रिट्रेस करेगा, क्योंकि यहाँ पर है डिमांड विद ऑर्डर ब्लॉक। ये वाला जोन पे तुम देखो तो बहुत सारे लोग का बाइंग है यहाँ पर, तो क्या करेगा बायर्स लोग, तो भाई पुश आउट तो करेगा ऊपर की तरफ। एंड आई कैन सी दैट ये जो ट्रेन है मार्केट ट्रेन लाइन को रिटेस्ट करके देन उसके बाद ही नीचे आएगा, एंड यहाँ से तुम लोग बाय कर सकते हो। तो सेल फ्रॉम दिस एरिया आफ्टर डूइंग अ रिट्रेस एंड बाय फ्रॉम दिस एरिया, एंड यू कैन कीप अ टारगेट ऑल टाइम हाई। सो आई होप यू गॉट दिस क्लियर, एंड मेरा व्यू तो बाई है जब तक ये ट्रेन लाइन ब्रेकआउट ना करे। सो वी विल सी यू गाइस, थैंक यू, वी विल सी यू ऑन यूएस सीजन। सो किसी का कोई भी डाउट है तो यूएस सीजन पे आ जाना, यूएस सीजन पे हम लोग फिर से डिस्कस करके ट्रेड करेंगे। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। सी यू गाइस।